एक्सपेरिमेंट क्या है उसको समझा देता हूँ, उसका थ्योरी वगैरह अगर जरूरत होगा तो बाद में देखेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप एक मेटल का रिजिडिटी मॉडुलस निकाल सकते हो। आप जानते हो रिजिडिटी मॉडुलस में शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है। शियरिंग स्ट्रेन कराता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए आपको सरफेस को पैरेलल करके फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर का समझा के मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें आप देख लेना तो समझ में नहीं आएगा। ये बुल्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो 6 मार्क का लिए ये एक्सपेरिमेंट होगा, उसका 4 मार्क असाइनमेंट तुम जो सबमिट करोगे उसी बेसिस पे तुमको अवार्ड होगा, और बाकी 2 मार्क क्विज होगा। वीक में किसी दिन एक क्विज होगा, डिक्लेरेशन होगा, गूगल क्लासरूम में वो क्विज कंडक्ट होगा। केमिस्ट्री में आप दिए हो, आपको पता है, उसी तरह ही फिजिक्स में होगा। 20 मिनट के लिए 10 क्वेश्चन, तो उसको कैसे आंसर करोगे अच्छे से वो हम बता देंगे। आज सिर्फ एक्सपेरिमेंट कैसा करना है वो 4 मार्क के लिए उसको बोल रहे हैं। तो इसमें मेटालिक माने एक मेटल का रिजिडिटी मॉडुलस आप निकाल रहे हो, और यहाँ पे एक ओआर मेटल का एक ओआर आपको प्रोवाइड किया गया है। ऊपर में एक टॉर्सन हेड होता है, एक सपोर्ट, ठीक है, उस सपोर्ट से, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से एक टॉर्सन हेड निकलता है इस तरह। ये टॉर्सन हेड कुछ नहीं है, इसके अंदर एक मतलब ये एक सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर जैसा छोटा सा है। इसी के अंदर आप तार को भर्ती करके ऐसे रखते हो। तार का एक हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है और तार नीचे तरफ इस तरह रहता है। ये वो मेटल वायर है जिसका रिजिडिटी मॉडुलस आप निकालना चाहते हो, और इस तार का नीचे आप एक हेवी बॉडी कंपैरेटिवली झुला देते हो। हम लोग यहाँ पे एक मेटल का डिस्क, यहाँ पे और एक टॉर्सन हेड लगाते हैं, और टॉर्सन हेड को एक डिस्क के साथ अटैच कर देते हैं, मेटालिक डिस्क। इस तरह का एक मेटालिक डिस्क सस्पेंडेड किया जाता है। आप रिजिडिटी मॉडुलस इस ओआर का निकाल रहे हो। जब ये टॉर्सन हेड को आप टाइट कर देते हो तो ये टॉर्सन हेड ओआर को यहां से चिपक के पकड़ता है, पूरा टाइटली पकड़ता है। आप एक साइड को टाइटली पकड़ के दूसरे साइड को ऐसे मोड़ने की कोशिश करते हो तो उसको ट्विस्टिंग बोला जाता है। तो आप ऊपर वाला हिस्सा को पूरा वायर का टाइटली पकड़ लिए, और नीचे वाला हिस्से में जो सिलेंडर है उसको थोड़ा रोटेट कर दिए इस तरह। तो इमीडिएटली ये वायर जो है ये ट्विस्टेड हो जाएगा। इसके अंदर एक एंटी टॉर्क, यहाँ पे ट्विस्ट करने के लिए आप क्या अप्लाई किए, एक टॉर्क अप्लाई किए मोड़ के सिलेंडर के थ्रू। तो उसके अंदर एक एंटी रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है, और वो रेस्टोरिंग टॉर्क इस डिस्क के द्वारा एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई होता है उसको अपोज करता है। अगर वायर को यूनिट एंगल में ट्विस्ट कर दो, यूनिट एंगल में, उसके अंदर जितना रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है उसको सी बोला जाता है। सी होता है टॉर्सनल कपल और यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। आप जानते हो कपल का मतलब होता है, तो मैंने कपल जो होता है, इफेक्ट ऑफ कपल इज टॉर्क। तो टॉर्सनल कपल मतलब आप एक वायर को टॉर्सन कराने से, मतलब ट्विस्ट कराने से, उसके अंदर यूनिट एंगल ट्विस्टिंग में जितना टॉर्क पैदा होता है वही होता है। यूनिट एंगल में ट्विस्ट करने से जितना पैदा होता है टॉर्क, ये इंटरनल टॉर्क, उसी को टॉर्सनल कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट बोलते हैं। और ये टॉर्सनल कपल जो होता है ना वायर का, इसका फॉर्मूला, मतलब इसको एक मैथमेटिक्स में आप प्रूव करके दिखा सकते हो कि टॉर्सनल कपल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई ईटा r टू दी पावर 4
होता है। पाई तो क्या है आप जानते हो, ईटा रिजिडिटी मॉडुलस है, आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। ये जो वायर है ना, इसका डायमीटर अगर डी है तो आर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर। और एल क्या है, एल है वायर का लंबाई, इस सस्टेनेड का इस पॉइंट से यहां तक जितना हिस्सा वायर का ट्विस्टिंग हो रहा है, एल वो है। सो सी की एक्सप्रेशन में जो जो क्वांटिटी है उसको हम बता दिए, ईटा रिजिडिटी मॉडुलस, आर रेडियस ऑफ द वायर, एल इज द लेंथ। अच्छा, ये जो एंटी टॉर्क होता है ना, जब आप नीचे सिलेंडर को थोड़ा मोड़ देते हो, टॉर्क अप्लाई करते हो, तो वायर के अंदर एक एंटी टॉर्क आता है। इस एंटी टॉर्क की वजह से वही रेस्टोरिंग टॉर्क का काम करता है। अब जब सिलेंडर को छोड़ देते हो ना, वो एंटी टॉर्क उसको वापस लाने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते एक एंगुलर स्पीड एक्वायर हो जाता है, जिसके चलते वो इनर्शिया में फिर क्रॉस कर जाता है। इसी तरह ये रोटेटरी ऑसिलेशन करता रहता है, रोटेटरी ऑसिलेशन। और ये रोटेटरी ऑसिलेशन अगर स्मॉलर एम्पलीट्यूड का है, एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, तो ये रोटेटरी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होता है। ठीक है, जिसके चलते इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को आप इजीली निकाल सकते हो, जो कि 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी है। सी क्या है, ये टॉर्सनल कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, और आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, जिसके द्वारा, जिस बॉडी के द्वारा आप उसको टॉर्क दे, वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। एक्चुअली ये वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सस्पेंडेड हेवी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। क्योंकि वायर हम लोग बहुत थीन ले रहे हैं, वायर नॉर्मली हम लोग थीन वायर लेते हैं, 1 मिलीमीटर का विड्थ करीब करीब, इसीलिए इसका जो, क्योंकि ये एक्सिस है, टोटल मास ऑफ द वायर इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द एक्सिस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वायर इज नेग्लिजिबल। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो सिर्फ ये डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके चलते ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है। अब इसी का एक्सप्रेशन आ गया, आई का एक्सप्रेशन आ गया, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। आई हो गया हाफ एम आर स्क्वायर और सी हो गया पाई ईटा आर 4 बाई 2l। कौन सो इसको अगर सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ईटा के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वो एक्सप्रेशन है 4 पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 इंटू एल बाई टी स्क्वायर। यही है हमारा वर्किंग फॉर्मूला। रिजिडिटी मॉडुलस निकालने का हमारा एम है ना, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काम करेगा। कैसे निकालोगे, आप लोगों को कैपिटल एम दे दिया जाएगा। कैपिटल एम क्या है, डिस्क का मास, एम है मास ऑफ डिस्क, जो कि आपको दे दिया जाएगा डाटा में। आप देखोगे जो असाइनमेंट जो होगा उसमें ये मास ऑफ द डिस्क दिया गया होगा, करीब करीब 1160 ग्राम या 50 ग्राम इस तरह। ये आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है ना, और रेडियस ऑफ डिस्क इसको भी हम लोग दे देंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो फिर आप लोग निकालोगे क्या, एम तो दे दिया, आर तो दे दिया, बाकी ये 3 चीज आप निकालोगे। ये किसे निकालोगे, इसके लिए आप एक स्क्रू गज यूज करोगे डायमीटर निकालने के लिए वायर का, तो एक स्क्रू गज का टेबल होगा, और उसमें से आप आर का वैल्यू पहले डायमीटर निकालोगे, आधा करके आर निकालोगे, तो आर निकल गया।
उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा, तुम देखो रिजिडिटी मॉडुलस जो होता है ना किसी भी मटेरियल का, वो मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी शेप, लेंथ, मोटाई इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओनली मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसीलिए ये वायर का लंबाई बदल दो, उसमें रिजिडिटी मॉडुलस नहीं बदलेगा। एक बार एक वायर चुन लिए तो आपका स्मॉल आर कांस्टेंट हो गया, 20 चुन लिए तो मास और आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है 4 पाई m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4, ये क्वांटिटी एक बार एक वायर चुन लिया तो उसके लिए ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। रिजिडिटी मॉडुलस भी एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जो बाकी एक्सप्रेशन है L बाई टी स्क्वायर, अगर आप L बदलोगे तो टी स्क्वायर भी बदलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो L इज इक्वल टू ईटा R4 और टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखो 4 पाई m r स्क्वायर बाय r टू द पावर 4 ईटा इनटू L। मतलब आप लंबाई को, ये टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट है एक वायर के लिए, एक बार एक वायर ले लिया तो इसीलिए L जितना बड़ा होगे, ये जो इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड उतने बढ़ेगा। तो सेकेंड टेबल में आप लोगों को अलग अलग लेंथ का वायर के लिए अलग अलग टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप यहाँ होते तो करते, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग अलग अलग लेंथ के लिए जो अलग अलग टाइम पीरियड है वो दे देंगे। मैं आपको शेयर कर रहा हूं क्या हम लोग देने जा रहे हैं। देखो ये तो थियोरी हिस्सा है जो आपके पास भी है। ये जो टेबल है रेडियस, इसको पहले टेबल 1 को अच्छे से मार्क करना। तुमको जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें पिच का वैल्यू एक वैल्यू होगा, आइदर 0.1 और 0.05। हो सकता है लिस्ट काउंट तुमको दे दिया गया होगा, अगर दे दिया है तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया है, रादर उसके बदले में नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल दिया गया है, तो पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर डिवीजन करके आपको लिस्ट काउंट निकालना होगा। फिर टेबल नंबर 1 जो है ना, ये टेबल नंबर 1 में आपको आईसीएसआर, जैसे स्क्रू गेज का मेजरमेंट होता है, आईसीएसआर, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, एफसीएसआर, मतलब आई एन एफ, ये 3 दिया जाएगा। असाइनमेंट में इतना ही होगा। आपको आई माइनस एफ निकालना है, पीएसआर निकालना है, पी इंटू एम करके, सीएसआर निकालना है, टोटल निकालना है, डायमीटर। इसी तरह 3 ऑब्जर्वेशन होगा, तीनों ऑब्जर्वेशन का निकाल के मीन डायमीटर निकालना होगा, और मीन डायमीटर को 2 में डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो पहला टेबल रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर सर पिच 0.1 नहीं तो 0.05 में से एक ही मिलेगा। जो होगा, जो उसमें उस एक्सपेरिमेंट में मतलब तुमको दिया गया होगा 0.1 दिया गया था सर शायद। नहीं, वो तुमको तो असाइनमेंट अभी तक मिल गया है क्या? अरे इसमें सर, ये जो आपने पीडीएफ भेजा था ना। नहीं, उसमें 0.1 और 0.05 लिखा है। तुमको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसमें तुम्हारे वाला एक्सपेरिमेंट के लिए पिच का वैल्यू जो है उसको रखना, बाकी को स्ट्राइक आउट कर देना। ओके सर लिस्ट काउंट रहेगा तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, लिस्ट काउंट अगर वो मेंशन करके देंगे तो लिस्ट इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं। ओके सर। और क्या बोलो सर? मतलब इसमें तो सर दे दिया गया है ना पिच एंड लिस्ट काउंट, तो हमें इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर असाइनमेंट में दिया होगा, अगर वो नहीं देके वो बोलेगा कि इन योर स्क्रू गेज द पिच इज 0.05 एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, तो फिर लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे? उसको निकालने का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके निकालने का तो सर वीडियो रे सब अच्छी सर, इस जिनस गुड़ा वीडियो रे अच्छी नहीं। हां सर वीडियो रे अच्छी सर, वीडियोटा भी लेंदी गोटे घंटा।
अच्छा ठीक है, मुझे एक जल्दी घंटे कर का दो। फिर ओके सर। तो ये कोई पहला टेबल रिलेटेड कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो रेडियस मीन डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करके रेडियस निकाल लेना। अभी टेबल 2 को देखो। मैं अभी बोला था अलग अलग लेंथ के लिए आपका अलग अलग टाइम पीरियड होगा। तो देखो ये क्या किया जाता है, लेंथ L1 पहले कोई एक लेंथ आपको दे दिया जाता है। सोचो लेंथ दे दिया गया 54 सेंटीमीटर। फिर एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, पहले ये डिश को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाता है, तो ये ऑसिलेट करने लगता है। 10 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है पहले बार। फिर दूसरे बार 15 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड उसी लेंथ में। तो इसीलिए L1 54 सेंटीमीटर में जो भी दिया गया होगा 10 ऑसिलेशन का टाइम और 15 ऑसिलेशन का टाइम निकाला जाता है। 10 ऑसिलेशन का टाइम अगर निकल गया, सोचो 10 ऑसिलेशन का टाइम, एक एग्जांपल पे बोल रहा हूं, 62.3 सेकेंड है। तो 1 ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा, 6.23 सेकेंड। तो उसी को टाइम पीरियड के जगह पे लिखोगे। 10 ऑसिलेशन के लाइन पे एक होगा, 15 ऑसिलेशन के लाइन पे, मतलब टाइम पीरियड को आप 2 बार मेजर कर रहे हो। फिर दोनों का मीन ले लोगे उस लेंथ के लिए, मीन टाइम पीरियड, और टी स्क्वायर निकालोगे, क्योंकि आपको टी स्क्वायर चाहिए ना एक्सप्रेशन में, कोई लेंथ के लिए टी स्क्वायर। इसी तरह 5 अलग अलग लेंथ के लिए आपको टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और आप इस फॉर्मूला को देखो, इसी की जगह पे y ले लो, इसी की जगह पे x ले लो। स्क्वायर के लिए एक कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू mx। तो दिस इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो आप अगर एक ग्राफ खींचोगे इस तरफ टी स्क्वायर लेके और इस तरफ l लेके, x एक्सिस में l और इस तरफ टी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा एक जो डाटा पॉइंट होगा वो इस तरह स्कैटर्ड होके बनेगा 5 डाटा पॉइंट। क्योंकि ये ग्राफ एक ओरिजिन के थ्रू पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है, सो आपको बेस्ट फिट लाइन खींचना होगा। बेस्ट फिट लाइन वो होता है जो लाइन के मतलब जो लाइन का चारों तरफ ये डाटा पॉइंट्स इवनली स्कैटर्ड दिखे। इवनली मतलब इस तरफ जितना एरो उस तरफ भी उतना एरो। ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है और बाकी सब एक साइड में रह गया, नहीं, उसमें तो फिर एवरेज वैल्यू आप नहीं निकाले। एवरेज वैल्यू मतलब बेस्ट फिटिंग। बेस्ट फिटिंग मतलब डाटा पॉइंट्स अगर एक भी वो लाइन के ऊपर नहीं रहता है चलेगा, लेकिन दे शुड बी सीन स्कैटर्ड इवनली अबाउट द स्ट्रेट लाइन यू हैव ड्रॉन। वंस यू गेट दैट स्ट्रेट लाइन देन गेट इट्स स्लोप। कोई दो अलग पॉइंट्स, डाटा पॉइंट कोई यूज मत करना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दो। ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया एल। तो स्लोप अगर निकालोगे, स्लोप होगा टी स्क्वायर बाई एल। लेकिन आपको क्या चाहिए, क्या एल बाई टी स्क्वायर, तो 1 बाई स्लोप कर दोगे तो ये एल बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को लेके इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आर पहले से माप दिए हो, एम और आर दे दिया गया है, इतना निकल आएगा। बस यही तरीका आपको करना है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो डाटा पॉइंट है, आपका ग्राफ पेपर जितना बड़ा होगा उसका कम से कम 80% रीजन को कवर करके ये डाटा पॉइंट स्कैटर्ड होना चाहिए। अगर किसी ने, सोचो आपका जो ग्राफ पेपर इतना बड़ा है और आप ग्राफ बनाए हो इस तरह, तो इसमें काफी मार्क आपका कट जाएगा, क्योंकि ये 20 या 25% ऑफ द ग्राफ पेपर कवर कर रहा है। कम से कम 60% ग्राफ पेपर कवर करना चाहिए। स्केल लिखने के लिए मत भूलना, नेम और रोल नंबर मस्ट रहेगा। और ये जो स्लोप आप निकाले हो ना, ये स्लोप का वैल्यू भी उसी ग्राफ पेपर के ऊपर रहेगा। एक्सिस के अलाउंग में जो पैरामीटर, जैसे आप लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, यूनिट के साथ वो रहना चाहिए। ये ग्राफ का सबसे बड़ा चीज है जिसमें काफी मार्क बच्चे लोग लूज करते हैं। सर तो ग्राफ पेपर में बाकी जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर नाम, स्केल और स्लोप का कैलकुलेशन करेंगे तो पहले तो आप डाटा पॉइंट 80% रीजन को कवर करके बना दोगे, स्लोप कैलकुलेट करके स्लोप को लिख दोगे, बाकी जो स्पेस बचेगा उसी में ही स्केल और नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा।
ओके सर। और सर जो रेडियस होगा वो टेबल 1 से मतलब निकलना है। निकाला जाएगा, वो तो डायमीटर निकलेगा, उसको आधे में डिवाइड कर दो तो रेडियस हाँ निकलेगा। ओके सर। फिर कैलकुलेशन में एल वाई टी स्क्वायर आपका कैलकुलेशन में ये 4 पाई एम आर स्क्वायर है, एम का वैल्यू आपको दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया है, ये है एल वाई टी स्क्वायर जो है वो 1 बाई स्लोप है। आपको स्टूडेंट अगर चालाक है तो ये स्लोप नहीं निकाल के एल वाई टी स्क्वायर कर देगा। अगर 20 डिवाइडेड बाई 20 करते हो तो वो टी स्क्वायर बाई एल है, अगर 20 डिवाइडेड बाई 20 करते हो तो वो एल बाई टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं सर को बोलूंगा और वीडियो दिखाएंगे, और वीडियो दिखाने के टाइम में ही तुम लोगों को मिल जाएगा वो असाइनमेंट को इमीडिएटली लिख के आप याद रखना 6 बजे से पहले आप लोगों को अपलोड करना है। आज फास्ट लाव रात 9टा 15 देखी फास्ट लाव। क्या सारा आपके ऊपर थोड़ा दया किया है? कर लीजिए। मैंने सारी आज फास्ट लाभ के लिए तुम लोगों को थोड़ा दया किए हैं। यस सर। मैं तो नहीं चाहता था, सर बोल दिए हैं तो उसको स्किप करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। सर वीडियो दिखाना आ गया सर। Is it visible now? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. To our physics lab, I am Sri K.P. Mishra going to explain regarding the experiment. going. Sir, the Here, sir voice echo the हो रहा है experiment is सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए सर। determination of rigidity modulus by dynamic method. स्वयं सर। So we have to understand what is the aim of the experiment first. Here aim is to determine rigidity modulus. Actually this experiment is based on elasticity. We know elasticity comes from Hooke's law, which is within elastic limit stress is directly proportional to strain. That means stress divided by strain is a constant. That constant is called modulus of elasticity, or you can say coefficient of elasticity. There are three moduli we know: Young's modulus, Bock modulus, and Shear modulus. Out of these three, we will study here shear modulus or modulus of rigidity of the material of a wire by dynamic method. So what is modulus of rigidity? It is the ratio of tangential stress to shear strain. So you have to understand what is tangential stress. It is the restoring force applied or deforming force applied tangential or parallel to the surface of a body per unit area. Similarly, strain, shearing strain is when a body is sheared with an angle measured in radian, then that is called shear strain. That means it is simply an angle measured in radian when the body is torn on applying a tangential deforming force. So ratio of these two gives us modulus of rigidity of the material. Here, as it is a material property, so modulus of rigidity is not of a wire, it is of the material with which the wire is made up of. Next is by dynamic method. This modulus of rigidity can also be determined by static method, where the entire system is at rest. But here in our experiment it is by dynamic method, because the whole system when it is in motion. So we will
determine modulus of rigidity in this experiment by dynamic method. What are the apparatus that we require in the experiment? Number one, a screw gauge. You see, this is a screw gauge having a particular least count. This screw gauge is used to determine the diameter of this wire given. So we will be given different wires having different materials. Here it is copper wire. We will get also similarly brass wire, similarly steel wire. So this modulus of rigidity changes with respect to the material. If material changes, then modulus of rigidity also changes. So it also changes with some atmospheric condition. If the temperature rises, then also modulus of rigidity changes. That means it decreases. So we will study now requiring some apparatus, and we will elaborate all these apparatus. So this is one of the apparatus, that is screw gauge. Next is a stopwatch. This is a stopwatch required to measure the number of oscillations which takes some time. That time can be measured in milliseconds using this stopwatch. Here you see in this stopwatch, this is the display, and there are three buttons here. This right button is to start and stop. This middle button is to change the mode, and this left button, that is to reset with 0. When we start our readings, we will start by pressing this button. Now it is displaying and running. Again, when we stop it by pressing, then it will display the whole value. Then if I press this button, now it resets with 0. So we will never touch this middle button because this mode changes. Next apparatus required in this experiment is a measuring tape. This measuring tape is given in foot, inch and cm. So we will use the cm side. This is the cm side and this is the inch side. So we will never use this inch or foot side, but this cm side, which is graduated in centimeter, we will use this side only while measuring the length of the wire. Next is this system of dynamic method. Here we see there is a dish. So this is a circular dish with some mass which is already measured by physical balance, and that is 1160 gram. That is capital M mass of the dish is required to calculate moment of inertia of the body. So it is the given data. Next, the radius of the circular dish is also measured by using vernier caliper, that is 7.5 centimeter. So we need these two while calculating moment of inertia of this suspending body. And this body is called a torsion pendulum. This torsion pendulum means it will oscillate torsionally. That means when some deforming force is applied on the surface of a body, then it turns with some angle and oscillates in a horizontal plane
and that oscillation is called torsional oscillation or rotatory simple harmonic motion. So this is a heavy metallic body suspended from a rigid support. This is a rigid support which is fixed on the wall, and this is a wall bracket. This wall bracket is having a torsion head. This portion, this one, is called the torsion head. And from this torsion head, an effective length of the given wire is attached. So one end of the wire is clamped here with this torsion head, other end of the wire is fixed to the other torsion head which is attached to the heavy circular disc. So this is the system of apparatus which is required in the experiment, and mainly this is the torsion pendulum which is required. So what is a torsion pendulum? It is a heavy metallic disc suspended from a rigid support with the help of a uniform specimen wire of particular length and having diameter 1 mm nearly, and it will oscillate in a horizontal plane with some small angle of oscillation. So this is all about the description of the apparatus. The most important part that we see already, that is the torsion pendulum. So which will oscillate torsionally. We have to keep in mind it must oscillate torsionally without any linear simple harmonic motion. So we will see how it works. While taking observations how it will work, we will study here. We see there is a pointer attached to the disc. When we apply some tangential force to the body by twisting the heavy body with a small angle, immediately an opposite force acts along the wire. That means when this body is torn with some angle or sheared with some angle, then this wire gets twisted. As a result, what happens? An equal and opposite force comes into play along the wire as axis and forms a couple. And this couple exerts a torque on the body. So this torsional torque helps the body to oscillate with some angular oscillation, and it continues for a long time. So we should not displace the body by changing its center of gravity. Otherwise, it will be difficult to get the value of modulus of rigidity. So we will see how it will oscillate. I am going to explain the wrong method first, which should not be followed in the experiment. You see, if the body is oscillates like this, then this is wrong method, because here the body is displaced with its center of gravity and it is linear simple harmonic motion. If the body, this is the one method, similarly another wrong method is like this. You see, all types of oscillations are now taking place. Wire is having some vibrations, body is also having some damping motion, and it is having some rotatory motion also, because the body is oscillating. So here all types of oscillations are taking place. So this is also a wrong method.
Similarly, here, this is also a wrong method. This is a wrong method. This is a wrong method because body is having damping motion. Wire is having some vibrations. So this is a wrong method. Deforming force is applied. As a result, it happens like this. But it should not be followed. So the right way of oscillating is, we see, you see here, this is the actual way of oscillations while taking observations, because there is no damping, no linear SHM, only it is oscillating tangentially with a small angular oscillation. So if it oscillates in this rotatory simple harmonic motion, then it is the right way of taking observations. So before that, we first find the diameter of the wire using screw gauge. So this is the process how it works. Then we will see what is the theory inside it. When the body oscillates in a torsional way, then the time period capital T is equal to 2 pi root over I divided by C, where I is the moment of inertia of this suspended body, which is equal to half mr square, where m is the mass of this heavy circular metallic dish, which is equal to 1160 gram. It is already measured using physical balance. Capital R is the radius of this circular dish, which is 7.5 cm. So these two are the given data in the experiment. So easily we can calculate the moment of inertia, which is in the working formula of time period. And in denominator, there is a C. This C denotes the restoring couple. That means the value of C when restoring couple exerts on the body, then this is pi eta r to the power 4 divided by 2L, where eta is the modulus of rigidity which is to be determined. Small r is the radius of this thin wire which can be measured using screw gauge, and this L is the effective length, which is the distance from the point of suspension to the point of oscillation. So this length, which will be measured using the measuring tape, that is from this point to this point, which is visible. So this is the length of the wire which will be given to us. And after simplifying, that means squaring this and putting the value of C here, we will get eta is equal to 8 pi I L divided by T square r to the power 4. So this is the working formula used to determine the modulus of rigidity of this material, and we know already the different parameters. I is the moment of inertia that can be calculated using the given data.
L is the given length, which is the distance between the point of suspension to the point of oscillation. Capital T is the time period. R is the radius of the wire, which can be measured using screw gauge. Let us come to the measurement of diameter of this wire using screw gauge. So here we see this is a screw gauge, and we have already discussed regarding this instrument. It works on the principle of a screw. That means it is the principle where there is a conversion of circular motion to the screw head into linear motion of the movable stud. That means if you rotate equal number of oscillations or equal number of rotations to the screw head, it travels equal displacement, equal axial displacement. It means again, if we give 10 rotations to the circular scales, it will travel 10 small divisions over the linear scale. So this is the equal axial displacement in the movable stud by equal number of rotations given to the screw head. So before we start taking readings, we first find the value of pitch and least count of the instrument. In this instrument, pitch is 0.1 centimeter. We have already discussed regarding pitch, how to calculate, and again I want to recall it. Pitch is the distance travelled by circular scale over linear scale by one complete rotation. So here the pitch is 0.1 centimeter, because we have already discussed this pitch. You open this circular scale by rotating it in the anti-clockwise direction, and we must see how many divisions in 1 centimeter on the linear scale. In this linear scale, there are 10 divisions in 1 centimeter. So one division is 0.1 centimeter. That means when you rotate the circular scale once, it must travel one division over the linear scale. That's why pitch is 0.1 centimeter, and we will enter here in the given copy. We will enter this is 0.1 centimeter. So it is now understood the value of pitch, which is 0.1 centimeter or 1 mm. And we will enter the value just above the table for screw gauge measurement. Then least count is pitch divided by total circular scale divisions. Here total divisions on the circular scale is 100. So we will find here pitch divided by 100. That is equal to 0.1 divided by 100. This gives us 0.001 centimeter. So this is the value of pitch and least count of this instrument. Similarly, we have another instrument or screw gauge having a different least count, which is 0.0005 centimeter. So before you start taking observations using screw gauge, we must find the exact value of pitch and least count. Unless we find it correctly, it gives wrong value for the measurement of diameter. Now we will take a reading here. We will keep the wire where the wire is perfectly stretched. We must rotate the circular scale in clockwise direction
Then keep the wire in between the two studs you see the wire is in between the two studs and it is not falling down. So we will note down the initial circular scale reading, that is the reading from the circular scale. You see the reading is in between 15 and 16. In between 15 and 16. So as the reference line is in between 15 and 16, we will take the previous mark, that is 15. If it is exactly coincides with 15, we will write 15. If it is in between 15 and 16, we will enter the value 15. So this is the initial circular scale reading, that is I. We will enter in the table. Now take out the screw gauge from the wire without disturbing the screw gauge, because it must be rotated in the same direction. Simply take it out without disturbing. So wire should not be pressed. Now the value we will enter here 15. Initial circular scale reading, that is 15. This is observation number 1. Then number of rotations we will find. Now we see there is a gap in between the two studs. This gap length is equal to the diameter of the wire. Now rotate the scale in clockwise direction, and we must see how many rotations it gives. That means initial value what we got, that is 15, how many times this 15 crosses this reference line. This is the reference line. With this reference line we will see how many rotations it gives. Rotate this. Yes, 15 has already crossed. That is one rotation. Second time 15 crosses the reference line. Number rotation is 2. Now we see there is no gap. It is already closed. So we will enter here number of rotations 2, and now the reading from the circular scale we must see, that is with respect to this reference line in between 19 and 20. In between 19 and 20 the reference line is present. So 19 is the final circular scale reading. So we will enter here FCSR as 19. Now we will see the difference. Difference is 15 minus 19, but it is negative. When 19 is subtracted from 15, it comes negative. So we will add 100 to initial and subtract. That means 100 plus 15 divided by minus 19. That is 115 minus 19. So this is the value of difference, 115 minus 19, that is 96. This is 96. This is the difference. Now we come to PSR, pitch scale reading.
that is pitch multiplied with number of rotations. Pitch is given 0.1, number of rotation is 2. So this is 0.2. Then CSR, difference into least count. Least count is 0.001 multiplied with 96. So 0.096. And when PSR is added with CSR, then it gives 0.296. And in this way, we will take 3 observations at 3 different places. So where the wire is having no kinks, we will take 3 observations at 3 different positions. Then after, we will find the mean value, mean of these 3. Adding these 3 and dividing by 3, we will get the mean value, which is the diameter of the wire. So very carefully and accurately, we have to measure the diameter of the wire, otherwise it will affect the value of modulus of rigidity. Next, we will see. सर बोलो सर वो समझ में नहीं आया सर आई माइनस एफ के बाद जो मैं बता difference- रहा हूँ, वेट करो तुम्हें सब डाटा मिल गया हाँ सर मिल गया तो उसको फिलअप करो। यस सर कर रहे हैं सर। तुम पिच और लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? रेडियस से तुम्हारा डाटा में क्या दिया गया है? 10 LSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऐसे दिया गया है। 20 दिया है सर, 20 LSD इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ 10 दिया है, 20 दिया है। हाँ इसका सर 10 है, 10 LSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 LSD इज इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1 इज इक्वल टू योर पिच। जिसका 20 दिया है, 20 LSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन का वैल्यू 1/20, दैट इज 0.05 इज इक्वल टू योर पिच। देन पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन लिस्ट इन मेन स्केल, दैट इज लिस्ट काउंट। मेन स्केल या सर्कुलर स्केल, तो मेन स्केल में तुम्हारा कितना डिवीजन है? 100। तो जिसका पिच 0.1 है, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। जिसका 0.05 सेंटीमीटर है, 0.05 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.0005 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। समझ में आया पिच और लिस्ट काउंट? हाँ यस ओके। जिसका 10 है 1/10, जिसका 20 है 1/20। So this will write under instrumental theory. क्या? So instrumental theory के नीचे ये लिखना है? यस। Okay sir. ओके। देन उसके बाद इनिशियल नंबर ऑफ रोटेशन FCSR मिल गया। देन I माइनस एफ। इफ I लेस देन F, I अगर F से छोटा होगा तो I प्लस 100 माइनस F होगा। इफ I ग्रेटर, हाँ सर समझ गया। अगर I ग्रेटर देन F होगा तो I डायरेक्टली माइनस F हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। सर ये Then PSR is equal to pitch into number of rotation. Then CSR is equal to I minus F into list count. Then PSR plus CSR, then mean. समझ में आया? यस सर ये समझ गए हैं। इसके बाद सर अरे पहले उसको कंप्लीट कर दो वो टेबल, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तुम्हें, ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होना। एक सेकंड सर, एक सेकंड कर लें दीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला टेबल का वीडियो कंप्लीट हो गया, पहला टेबल कंप्लीट कर दो। फिर सेकंड टेबल का कंप्लीट होगा फिर वीडियो, तो सेकंड टेबल कंप्लीट करना। ठीक है, ऐसे ही करना, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट वीडियो रन कर देता हूँ, तुम कंप्लीट कर देना। क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट वीडियो रन करेंगे या स्टेप बाय स्टेप करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सर, स्टेप बाय स्टेप सर। ठीक है, तो पहले अब अभी 16-10 हुआ है, 15 के अंदर कंप्लीट करो। यस सर। खाली टेबल गुड़ा का कंप्लीट करिए तो सर। हाँ सर, टेबल गुड़ा कंप्लीट करे तापर ग्राफटा कले आगे सर एई टेबलटारे पिला भूल कर दउछन सर। नहीं एकाथरे देखे देले भी ग्राफटा भी मन रख करिवे नहीं ये सेटा। हां सर, एकाथरे सर स्टेप बाय स्टेप कर कर का जीबे। ठीक है ठीक है। मो केलु मोबाइल रे चार्ज टी कम अछि तो मझिरे मझिरे कटि। सर आपण तो सर सब स्टार्टिंग को कहि देथिन, आपण ग्राफ की दरकार नहीं नहीं मोर ये रे मो अछि, लैपटॉप रे अछि। लैपटॉप रे सुना जाने प्रॉब्लम से है।
सर पीएसआर कैसे फाइंड करना था? क्या क्या? पीएसआर? CSR इज इक्वल टू I माइनस एफ इंटू लिस्ट काउंट। ओके सर। और सर ये सर जैसे आई और एफ दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। हाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहां एक रोटेशन होगा। ठीक है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यस सर। हाँ सर। लास्ट टाइम तुम्हारा 11 सॉरी 40 430 है, सॉरी 415, मतलब ये वीडियो फास्ट पार्ट के लिए। अच्छा 10 लीस्ट काउंट है तो 0। 10 लिस्ट काउंट जिसका होगा 1/10 कर देना, जिसका लिस्ट काउंट होगा 0.01। है ना 0. जिसका 10 डिवीजन है 0.1 है पिच, लिस्ट काउंट है सर हाँ सर 0.1 सॉरी सर। 0.1 डिवाइडेड बाय 100। हाँ सर। और जिसका पिच सर 20 LSD है सर उसका होगा सर 0.05 cm। यस यस। हाँ सर थैंक यू सर। सर हम्म। सर ये जो पीएसआर तो सर सब में 0 आ जाएगा क्यों ना एन तो 0 ही है। हाँ तो 0 होगा। ओके सर। सर बोलो। आई जिसका कम होगा उसका क्या बोले थे? इफ I लेस देन एफ देन I प्लस 100 माइनस एफ। I अगर ओके बड़ा है सर। तो डायरेक्टली माइनस एफ हो जाएगा। ओके। सर लिस्ट काउंट तो पिच बाय 100 है ना। हम्म। ओके सर। नमस्कार।
सर ये मेन डायमीटर तीनों का एक करके लिख देंगे, एक बस। हाँ, क्या बोल रहे हो आर्यन? सर ये मेन डायमीटर तीनों का एक करके बस लिख देंगे ना? क्या तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, वो और एक बार बोलो। सर वो पूछ रहे हैं मीन डायमीटर क्या तीनों को एक करके लिखना है? क्या पिच? नहीं नहीं सर, सर मीन डायमीटर। मीन डायमीटर। मेन डायमीटर तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे? सर वो बस एक बस लिख देंगे ना जो आएगा। हाँ, ठीक है, एक बार लिखना है। ठीक है, थैंक यू सर। तो कंप्लीट हो गया, तो 18 हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में रन कर रहा हूँ। सर 1 मिनट सर। कौन? 1 मिनट। गुरु प्रसाद। यस सर, हो गया सर, कंप्लीट होगा। वही मीन लिख रहे थे सर। कितना असला मीन कहलू? मीन कितना आया? There is 0.094. The apparatus, how it functions, and मीन बाय 2, दैट इज योर स्मॉल आर। मीन बाय 2, दैट इज योर स्मॉल आर। समझ में आया? Yes sir. यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट। what is the value of modulus of rigidity that can be determined using a table, that is L versus T square table. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर वो। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मैं देख रहा हूँ। सर वो बफरिंग हो रहा है सर वो वीडियो। हाँ 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 ठीक है। Now, okay, let us start. Is it okay now? यस सर। Oscillate the body Yes, sir. tangentially with a small amplitude. You apply the deforming force to the body tangentially so that it will oscillate with a small rotatory simple harmonic motion without changing its center of gravity, which I have already told. Here we see that there is no damping motion of the body. Before that, we must fix the length of the wire. So, what is the length given? We see, open this torsion head in anti-clockwise direction in this way. Open this. Now it is open, wire is loose. Whatever length is given, we fix the length using a measuring tape. So, using a measuring tape, now the length of the wire, suppose it is 50. So, you see this is 50 centimeter starting from this to this. This is 50 centimeter. So, we will keep the wire 50 by loosening this torsion head. You see, this is the 50 centimeter. That means from the point of suspension to the point where the head is at the point of oscillation is 50 centimeter. So after length is fixed, you make tight by rotating this torsion head in clockwise, so that it will not slip and it will not fall down. So length is 50 centimeter. Now oscillate the body torsionally by giving
a twist to the body. With a small angle. So this body is very heavy in comparison to the mass of the wire. So if oscillation becomes more, then this time period will be affected. Now it is oscillating with a small angle. We must take a stopwatch resetting with 0. We see it is now 0. When it will start from one extreme position, we will start the stopwatch by pressing this button. So I am going to take one reading. When it will start from this extreme position, I will start stopwatch. It goes to the next extreme, comes back. This is 1. Again goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You see, this is the time for 10 oscillations. It is 44.19. So time for 10 oscillations we will enter in the given table. That is 10 oscillations time in second, it gives 44.19. Similarly, we will go to 15 oscillations without disturbing the body because it is oscillating properly with a small amplitude. So we should not touch the body, and we will reset it with 0 by pressing this button. You see, now it is reset with 0. Now we will go to 15 oscillations starting from 1, 2 like this. Second time again we will take this reading. From this position we will start. It will go to the next extreme, comes back, because we know oscillation always in the same direction. So I will start from here by pressing this button. Start. 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we see here in the display, it is giving us 1 minute, 6 seconds and 97 milliseconds. So not in minute. So 1 minute, 6 seconds means 66 seconds and 0.97. This 97 is the millisecond. So we will write here, that is for 15 oscillations it gives 66.97
0.97. Obviously, the time is more because number of oscillations is more. So we will find the time period, that is time period, that is capital T, which is the time for one oscillation. We will find in the corresponding time period for 10 and 15. For 10 it gives us 4.419. Similarly, for 15 we will see here time, that is dividing by 15, that is 4.4 6. So here we see both are coming very close to each other. This time period never changes for a particular length. So if length changes, then time period must change, because time period is depending on the length of the given wire. So we will find here the mean time period. This is the mean time period. Adding these two and dividing by 2, it gives us 4.438 something. So this is the time period for this particular length, that is 50 centimeter, and take its square up to 3 decimal places, that is t square in second square. So by squaring this value, we will get the value of t square. We will proceed in this way by changing the length of the wire. When we will change, we must change by increasing 15 cm or 10 cm, what we are given to us. So it is better to decrease the length of the wire from maximum length to minimum length, because when we decrease the wire, we have to take the wire up so that there will be no kinks along the wire. If we increase the length of the wire, then this kink may come along the wire, so it will affect the oscillation. So always from the maximum length to the minimum length, we will proceed the experiment. Open this in the same way by rotating the torsion head in anti-clockwise. It is opened. Now whatever length is given using measuring tape, we will fix the length between the point of suspension to the point of oscillation, and we will make it tight so that it may not fall down. After the length is fixed, we will proceed in the same way by taking 10 and 15 oscillations. Always we must keep in mind that body will be oscillated torsionally with a small amplitude without changing its center of gravity, and it must oscillate along the wire as axis. So in this way we will proceed for 5 different lengths. This is L1, L2, that is 40 cm, L3 30 cm, L4 20 cm, L5 10 cm. In this way we will take for 5 different lengths and we will go to a graph. So let us come to the graph. Complete second table. Yes, sir. Give us 5 to 6 minutes.
मीठा का अन्ना बार करना सर अप टू 3 प्लेसेस तक लेना है। 2 डेसिमल तक लो, इजी हो जाएगा ग्राफ। ठीक है सर हाँ सर वो जो टाइम पीरियड है वो जो टाइम इन सेकंड उसको डिवाइड करना है ना नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। यस ओके सर। कंप्लीट हो गया। नो सर थोड़ा रुकिए। सर डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 लेना है ना। यस 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 ओके सर। सर डेसिमल 3 तक ले लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हो गया, रेस्ट पार्ट चलाते हैं, वीडियो रन करते हैं। ठीक है सर थोड़ा सा और थोड़ा 2 मिनट सर दीजिए, अब भी यस कंप्लीट हो यस जाएगा यस सर। यस 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 काई मीठा काई करते हैं। where graph is L versus T square. Here, this time period is a dependent variable and L is the independent variable. So, time period depends on the length of the wire. So, this length is taken along x axis as an abscissa and T square is taken along y axis as an ordinate. So, in the graph, maximum coverage of the graph should be used. 2 columns and 2 rows from the extreme left and from
extreme bottom, it should be left, and we draw x-axis and y-axis intersecting the origin. So this L is taken along x-axis and t square in secant square is taken along y-axis. So we must see the data which we have already got from the experiment. What is the value of length given? That is starting from 50, 40, 30, 20 and 10. There are 5 different lengths. So we will put here along x-axis, that is 5 as origin, then 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. And along y-axis t square, so length we have got for 50 cm is 4.438, that is for 50 t square we got 4.438 secant square. Similarly, when you come to 40, it will be decreased. When you come to 30, it will be decreased again. In this way, it will decrease, because time period t square decreases means this L must decrease. So after we plot the points in the graph, it will come a straight line passing through the origin. Because our formula, which is already given, we see that is eta equals to 8 pi I L divided by t square r to the power 4. If we put the value of I, which is equal to half mr square, then it gives us 4 pi mr square L divided by t square r to the power 4. That is, eta is equal to 4 pi mr square multiplied with L divided by t square r4. If we cross multiply these two, we will get eta t square r to the power 4 is equal to 4 pi mr square L. That means t square is equal to 4 pi mr square divided by eta r to the power 4 multiplied with L. You see, this t square is a constant multiplied with L. If this t square is taken as y and it is a constant taken as k, then this is L. It is say x. So y equals to kx. That means it is the form of the equation of a straight line. Y is equal to mx plus c, where c, that y-intercept is 0. So it is of the form y is equal to mx. This y is here t square and this L is the x. And this is the value of constant. So it is of the form of the equation of a straight line passing through the origin. There is no y-intercept. So while drawing the line, we must keep in mind that the straight line is passing through the origin. Without
giving us any y-intercept because C is 0 here. Y is equal to constant multiplied with L. So this t square is y, so this is taken along y-axis, and x, that is L, is taken along x-axis. So we must draw the line in such a way that it will fit to the graph. That means it is drawn in such a way that it is deviating from all sides equally. It is a statistical distribution. So here, if we see the line, then this line will pass through some points, and some other points may be deviating from the line equally on either side. This is the best statistical distribution. All the points will never come on the line. So after we draw the straight line, we will choose randomly 2 points from the line, because all the points on the line are satisfied. So randomly, if we choose 2 points, we will find its corresponding value, draw a right angle triangle taking these 2 points. So this is the value of t square and this is the value of L, and the slope of the line is t square divided by L. Take its reciprocal. 1 by slope is equal to L by t square. Putting this value in the working formula, we will get the value of modulus of rigidity of the material which is given to us. So in this way, we will find the experiment and we will determine the value of modulus of rigidity of the material given. Before we come to the conclusion, I am ग्राफ समझ में आया? एक्स एक्सिस में तुम्हें लोड को लेना है, वाई एक्सिस में तुम्हें क्या लेना है? सॉरी, एक्स एक्सिस में तुम्हें क्या है? एल को लेना है, वाई एक्सिस में तुम्हें टी स्क्वायर को लेना है. ठीक है, उसके बाद स्लोप निकालोगे, 1 बाय स्लोप निकालोगे. ठीक है, 1 बाय स्लोप में तुम्हारा एल बाय टी स्क्वायर, कैपिटल एम और कैपिटल आर का वैल्यू तुम्हें गिवन है. उसके बाद नीटा का कैलकुलेशन करोगे. सर हाँ, एक्स एक्सिस में तो सर एक डिवीजन को हम 10 यूनिट्स ले लेंगे सर, एक यूनिट. ग्राफ शुड बी मोर देन 80% ग्राफ पेज का कवर होना चाहिए. यस सर. सर वाई एक्सिस में सर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हैं सर. तुम देखो तुम्हारा मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसी हिसाब से लो. यस सर. सर मिनिमम मैक्सिमम में 40 का डिफरेंस है, उसी हिसाब से लो.
सर सर सौभाग्य बोलो। टेबल 2 में टाइम पीरियड 2 डेसिमल तक ले रहे हैं, यस यस यस। तो फिर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, मतलब दोनों ऑसिलेशन एक लेंथ का। ठीक है सर। सर सर जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे सर, सर जो वाई एक्सिस में टी स्क्वायर है सर, उसमें हमारा सर मतलब ग्राफ तो मतलब छोटा पड़ जा रहा है सर। अगर कोई भी एंगल से हम लोग स्केल ले रहे हैं तो क्या करें? फिर बहुत छोटा ही हो जा रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है ग्राफ में? तुम्हारा रीडिंग के हिसाब से स्केल चूज करो। वही सर। सर लैंडस्केप में बना ले क्या? बना। लैंडस्केप में बनाने से क्या होगा? सर वो लेंथ के लिए लंबा जगह मिल जाएगा और टाइम के लिए। लेंथ तो क्या है देखो। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर, जैसे हमारा ग्राफ जो है ना सर, हमारा ग्राफ जैसे 14.51 से शुरू हो रहा है टाइम स्क्वायर सर, हाँ। तो हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट 10 ले सकते हैं सर, 10 to 14 तुम एक 16 काम 18 करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ सुनोगे? बोथ साइड हाँ किंग सर। देके क्यों नहीं कर रहे हो? क्या सर? बोथ साइड ब्रेक देके क्यों नहीं ग्राफ प्लॉट कर रहे हो? सर जिगजैग करके। हाँ यस करके सर। ना सर, हाँ अरे वही सर कंफर्म करना चाहते थे सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। वो ठीक है कि नहीं? हाँ सर समझ गए। हाँ तो तुम्हें इजी हो जाएगा अब स्केल चूज करने में। हाँ हाँ सर, इजी हो गया, इजी हो गया। हाँ
सर हम्म, सर इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी लास्ट में लिख सकते हैं? क्या? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी लास्ट में लिख सकते हैं क्या? हाँ, जो लिखा है। सर ग्राफ हो गया। स्लोप निकालो, 1 बाय स्लोप निकालो, देन फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके सबमिट कर दो, और कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन मोस्ट। सर वो स्लोप के लिए 2 अननोन पॉइंट्स लेना पड़ेगा या नोन दो पॉइंट्स ले अननोन सकते? पॉइंट, 2 अननोन पॉइंट। ओके सर। मैं 1 सेकंड आता हूँ थोड़ा, ठीक है, 1 सेकंड। हो रहा है ना रे? हाँ सर। ओके, शिवम, शिवम, यस सर। हो रहा है तो? हाँ सर, हाँ सर, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। अर्णव, अमित, अर्णव, अमित, यस सर। हो रहा है ना? यस सर, ग्राफ बना रहा। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर। ओके,
अनिका सिंह, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? हो रहा है तो ठीक ठाक? हाँ सर, हो रहा है। ठीक है। वैष्णवी, यस सर। हो रहा है ना? यस सर, कर रहे हैं। ना मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। अमीश, यस सर, कर रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कुछ प्रॉब्लम है क्या आपका? नो सर, नो सर। ओके। ऋषभ, ऋषभ प्रसाद, यस सर, हो रहा है सर। हाँ ठीक ठीक। मैं पूछ रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। नो सर, नो सर। सर, मीटिंग लीव कर सकते हैं क्या?
प्रॉब्लम बोलो। तो पूछ रहे सर ये मीटिंग लीव कर सकते हैं क्या? क्यों? तुम करो, कंप्लीट करो, कहीं प्रॉब्लम होगा तो देखते हैं। ओके ओके ठीक है, और 10-15 मिनट के बाद मैं सर को कॉल करूंगा, सर बोलेंगे तो कॉल करूंगा। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना?